Hello and welcome. First of all, I am so sorry for being so late. It was quite a busy month and still I can't guarantee my regular presentations. So please forgive me for not exposing these defenders of Islam consistently. Anyway, today we have a very disturbing topic. I mean, come on, it's obvious. Sex slavery in Islam. Now, this video isn't about whether sex slavery exists in Islam or not, because for a few decades Muslims lied that in Islam there isn't such a thing called sex slavery. But then we found extremely disturbing human slavery material in Islam. So that's not the topic. The topic we have is whether Islamic slavery is good or bad. I mean, definitely this is a total inhumane practice, but since these fair society Muslims say that Islamic slavery is actually not slavery at all, it's actually freedom. They also defend slavery by saying, oh, America has a terrible history of slavery too, therefore you can't question Islamic slavery. We treated slaves much better than others. Well, who the hell said that America represents human rights? These are global human rights. And if your religion under any circumstances promotes to own slaves, it's totally unacceptable, regardless of the circumstances. We have a video from ABUZAR Responds channel where he is defending Islamic slavery. So without wasting a sec, let's get into it. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का हार्म इस्लाम में हराम है। सही हदीसें हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी तरीके के हार्म को जो है हराम फरमाया है। I am sorry to interrupt you, but if you read it carefully, it clearly says al-Muslimu man salima al-Muslimuna. Man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. From whose hands other Muslims are safe. You are an Indian Muslim, right? You have read Ganesha and Krishna stories in your books. And I was a Pakistani Muslim. I have read and studied Islam and Islamiyat, and this is one of the hadiths that I have read back in 2010. So shut your mouth up. This is a crystal clear childish argument in defense of sex slavery. Even though if Muhammad says Muslims are those from whose hands and tongue non-Muslims are safe, it wouldn't mean Muhammad considers sex slavery as bad, since it was considered a norm in that era. For example, if a Hindu extremist say, best Hindus are those from whose hands and tongue other Hindus are safe, does it in any way suggests that Hindus should stop violence against Muslims? You don't need some special powers to figure it out. All you need is critical thinking. But alas, these childish teenage hateful viewers of ABUZAR won't get it, since they believe solidly that Islam is just perfect and we debunked everything against Islam. But hey, no worries, okay? जो हार्म है वो मिनिमाइज होना चाहिए, और जो शख्स इस दुनिया में किसी पर हार्श होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर हार्श होगा। The definition of harm depends. So if Islam even says not to harm anyone, it doesn't convey the message to not make a woman slave. So give something crystal clear instead of playing mental gymnastics. I once heard someone say, I am against discrimination, but then they defend policies that perpetuate inequality and prejudice. है। अनदर हदीसें मौजूद हैं जिसमें एक सहाबा जो हैं वो एक सर्वेंट को मार रहे थे, तो पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनसे कहा कि याद रखना अल्लाह ताला तुमसे ज़्यादा पावर रखता है तुम्हारे ऊपर। तो उन सहाबी ने उस सर्वेंट को आज़ाद कर दिया अल्लाह के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा ना करते तो अल्लाह तुमको जहन्नुम में जलाता, मतलब मारने पर आज़ाद कर दिया। ठीक, और हमारे पास सही हदीसें अवेलेबल हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम में, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी शख्स अपने स्लेव को एक थप्पड़ मारता है तो उसका कफ़ारा ये है कि उसको आज़ाद ही करना होगा। मतलब एक थप्पड़ मारने पर स्लेव को आज़ाद ही करना होगा, ये उसका कफ़ारा है, एक्सपायेशन है। तो यानी थप्पड़ मारने पर इस्लाम स्लेव को आज़ाद करने का हुक्म देता है। किसी भी तरीके का हार्म इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब ये चीज़ आपको कॉमन सेंस भी बता देगी कि जब किसी तरीके का हार्म इस्लाम में अलाउड नहीं है तो जो रेप है वो हार्म से एसोसिएटेड होता है, तो रेप भी इस्लाम में हराम है। I'll repeat it again for you. Listen, these ahadith doesn't lead to the conclusion that rape is also harm, so it's not allowed in Islam. I've told you so many times that just because you treat slaves in a good way
doesn't mean your slavery is justified. It's still immoral. It's like saying the marital rape happens when you rape your wife after her death. It's not a rape if she's alive. Thus, in Islam, there is no such thing as marital rape. Quite stupid, right? That's what you're doing. और उसके बाद कंसेंट होता था या नहीं होता था, कंसेंट की डेफिनेशन क्या है, लिबरल सोसाइटी की जो कंसेंट की डेफिनेशन है वो कितनी शेकी है, इस सब चीज़ को मुफ्ती साहब ने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, बिना इस वीडियो को पूरी देखे आपके बात समझ में नहीं आएगी। Alright, so ABUZAR is going to present Mufti Yasir al-Wajidi's presentation. Actually, it's a long presentation and I'll talk about it later. But as you can see, we have Qaisar Raja, the guy who said murder is absolutely wrong, and this Muslimah known as Sister Elena and Amir Haq. Alright, that's going deep darker. फाइन है, उसके साथ अगर उसका जो मास्टर है वो कंज्यूमेशन करता है तो क्या ये रेप नहीं है? क्योंकि ये उसके कंसेंट के खिलाफ है। आपने उसका कंसेंट लिया नहीं और उसके साथ ये ज्यादती की, जिनसी ज्यादती, तो ये जिनसी ज्यादती तो रेप हुई। हाँ, अगर उसका कंसेंट हो तो भी कोई हरज नहीं है। तो सारी बात जो है वो कंसेंट पे आकर रुक जाती है, रजामंदी के ऊपर रुक जाती है। यानी अगर आप आज के लिबरल सोसाइटी में देखें, एक आदमी चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, अगर वो आउट ऑफ द वे जाकर किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, कंसमेशन करता है और रजामंदी के साथ, तो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीवी को प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीगली या मुआशरे में इमोरल भी नहीं समझा जाता। मैं लिबरल मुआशरे की बात कर रहा हूं। Wow, they criticize the West and label sexual relationship with another woman as immoral, while defending an idea in which a married Muslim man engages in sexual intercourse with his slave women, and it's deemed remarkable because the master isn't harming her. I mean, come on, the Muslim man isn't hurting her. She is treated well, so it's not considered immoral, and of course, the Muslim wife can't voice any objections to the man's actions. I must say, I'm quite impressed by your liberal Islamic moral perspective, and it's still immoral in West to cheat on someone. But of course they can't kill you for such a thing. That's the difference. They don't arrest someone for doing such acts. So Mufti Saab, Western people doesn't celebrate cheating on wives, so keep this in mind. And just take a look at the comments on this video. None of them are neutral. All of them are so biased, except this comment, where a honest Muslim says that he disagrees with Mufti Wajidi. Anyway, let's continue. तो सारी बात आती है कंसेंट के ऊपर। तो आज कंसेंट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि कंसेंट है क्या। और मैं अपने नाज़रीन से चाहूंगा जो आज की इस लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे कि वो इसको आज नोट कर लें और बहुत गौर से सुने कि कंसेंट क्या है। देखिए, एक अमेरिका में और यूरोप में एक तंजीम है, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है प्लान्ड पेरेंटहुड। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आप जा सकते हैं। उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर कंसेंट अगर आप डालेंगे तो ये पूरा जो मैंने आपके सामने पेश किया है स्क्रीन के ऊपर, ये आ जाएगा, ये पूरी इबारत, ये पूरा टेक्स्ट। वो कहते हैं कि कंसेंट के 5 मेयारात हैं, 5 स्टैंडर्ड्स हैं। FRIES, अगर आप इसको एक लफ्ज बनाकर पढ़ेंगे तो है फ्राइज, यानी फ्रेंच फ्राइज। तो मुझे यकीन है कि आज के बाद फ्रेंच फ्राइज थोड़ा सा आपको बुरे लगेंगे, इसलिए अगर आप उसको आलू का चिप्स कहें तो ज्यादा बेहतर है। Was that a joke, Mufti Saab? Should I laugh? If you want to watch this particular video or check the sources, I'll give the link in the description box. Alright, so I'll skip to the main point because he's just walking in a circle. रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब यह है कि अगर एक मर्तबा औरत ने कंसेंट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो जब तक कंज्यूमेशन चलता रहेगा, इंटरकोर्स चलता रहेगा, ये कंसेंट बाकी है, बल्कि औरत किसी भी मौके पर उसको रिवर्स कर सकती है। तो लिखा है कि एनीवन कैन चेंज देयर माइंड अबाउट व्हाट दे फील लाइक डूइंग एनी टाइम, इवन इफ यू हैव डन इट बिफोर एंड इवन इफ यू आर बोथ नेकेड इन बेड। यानी अगर इस हाल में भी है कि दोनों बिस्तर में बरहना है, लेकिन बहुत करीब है कि कंज्यूमेशन हो गया, एकदम माइंड बदल गया और कंसेंट खत्म कर दे औरत, तो ये उसको हक है। इसके बाद अगर मर्द कोई आगे बढ़ेगा तो ये रेप हो जाएगा। अब ये जो इसमें 3 पॉइंट हैं, रिवर्सिबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहूंगा। और उसमें भी जो इंथुसियास्टिक है, इंथुसियास्टिक का क्या मतलब है
प्लान पेरेंटहुड के नजदीक। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकता है भाई ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बुनियाद पर पूरा मुआशरा चल रहा है। अमेरिका में लॉज बन रहे हैं, जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर चल रही है। ये इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। We can still discuss the influence of this organization, but for the sake of argument, let's say it forms the foundation of liberal moral values. So continue. तो enthusiastic क्या है? Asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay? थोड़ा सा I'm sorry, लेकिन बात को बहुत वाज़ेह करने के लिए मुझे कुछ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मसलन एक आदमी और एक मर्द और औरत जमा है, ओरल सेक्स चल रहा है। अब मर्द जो है वो उसको बदलना चाहता है, तो वो पहले इजाजत लेके मैं उसको, यानी जो एक्चुअल सेक्स है कि मैं वो कर लूं, वो कहेगी हाँ जी ठीक है कर लो, चलो भाई आगे बढ़ो। अगर उसने नहीं पूछा ये रेप हो जाएगा। इसी तरीके से कंफर्मिंग दैट देयर इज रेसिप्रोकल इंटरेस्ट बिफोर इनिशिएटिंग एनी फिजिकल टच। कोई भी जरा सा फिजिकल टच हो पहले पूछ लो, ठीक है हाँ भाई ठीक है चलो भाई आगे बढ़ो। उसके बाद आगे लेटिंग योर पार्टनर नो दैट यू कैन स्टॉप एनी टाइम। आप अपने पार्टनर को ये बता दें, देखो भाई किसी भी वक्त आप जो है, यानी मर्द या औरत से कहते हैं किसी भी वक्त तुम्हारा जहन किसी भी लम्हे अगर बदलना चाहे फौरन बदल जाए, मुझे बता देना, मैं फौरन रुक जाऊंगा। और नॉट ओनली ये, आगे कहता है periodically checking in with your partner such as asking is this still okay। मसलन यानी तसव्वुर कीजिए कि जो लोग मैरिड है वो तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मर्द और एक औरत वो कंज्यूमेशन कर रहे हैं, और बार बार इस अमल के दौरान मर्द ये पूछ रहा है ठीक चल रहा है, हाँ जी ठीक चल रहा है, चलो भाई आगे, ठीक चल रहा है, अब आप सही चल रहा है, हाँ भाई सही चल रहा है, चलो भाई आगे। ये है कंसेंट। Well, yeah, I mean, this is so nonsense, right? Asking again and again what to do, what not to do. I mean, the West is a fair society, right? And we, the Muslims, are the best. These Westerns are so funny. If you take some time and look at the rest of the article, you will see Mufti Saab ignored the main highlight in order to prove them to be the jokers on human rights. Enthusiastic consent isn't always defined with a vocalized, emphatic yes. Enthusiastic consent is when both partners are clearly into what's happening. How do you know if your partner is clearly into it? Pay attention to their body language, respect their signals, and listen closely to what they do say. If your partner is clearly into it, there should be no doubt about it. So that's it, Mufti Saab. All you have to do is to be neutral and do some research, instead of just impressing your desi viewers so they can count on you. Keep in mind this video is on ABUZAR's channel, so he claims Mufti Saab is in God mood, and he can't be wrong, and he just debunked slavery and exposed the fake ex-Muslim community. So ABUZAR, no discount in shame. Take all of it. तो इस तरह ये एक ऐसा कंसेंट को डिफाइन किया गया है ताकि बेड में, ये वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि अभी तक जब कंज्यूमेशन होता है तो मर्द लीड करता है, लेकिन आप कंसेंट को इस तरह डिफाइन करें कि मर्द लीड ना करे, औरत लीड करे, इसलिए कंसेंट की ये डेफिनेशन की गई है। That's a solid straw man fallacy, Mufti Saab. Once again, you've got it completely wrong. In the same article you've presented, there are a few clips in which they explained it. I mean, imagine teaching consent to such people in a childish way, and yet no one tries to learn anything from it. Just take a look at this clip. Sometimes the timing is not right, or your partner is just not in the mood. But that does not mean they're not into you. Come on, let's take a break. Babe, I have to do well on this test tomorrow. It'll only take a few minutes. I have to focus. Give me like 20 more minutes and then I can take a break. Besides, I want to be able to give you all my attention. I guess I can wait. You let me know when you're ready for me. Thanks, babe. Consent's all about watching, listening, and asking, and being honest with ourselves about what the other person is trying to communicate. And by the way, they are not suggesting that women should start stopping their husbands from intercourse just to test them. It's not like what you might think. But of course, sometimes if a woman is feeling bad, there must be something wrong, of course. It's not as if a woman is enjoying herself so much and suddenly says, "Stop it, because my life, my rules." तो
अब यहाँ सबसे पहले सवाल होता है कि ये जो रिवर्सेबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुजियास्टिक है, ये जो रिवर्सेबल है, क्या वाकई कंसेंट लिबरल सोसाइटी में रिवर्सेबल होता है? ऐसा नहीं है। Mufti Saab, be realistic. They are explaining the concept of consent in such a childish way to teach consent from the very basics. Yet we don't find these Muslims learning anything from these articles. Instead, they cherry pick a few things, create strawman arguments from them, and then present these distortions to their Muslim fellows. Rahman Baba was right. Harbut ikhbal ikhbal mi wani se banarij ki banar lidani na de. Expect nothing from these Amir Haq and Mufti Saab viewers. All of them are the same, totally biased, anti-West, watching anti-feminist content and wasting their time with these kind of nonsense responses. That's all they can do, nothing better, victims of red pill content. But anyway, continue please. मैं कई मिसालें आपको दूंगा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी मिसालें जो हैं वो क्या कहना चाहिए, सेक्स और कंज्यूमेशन से रिलेटेड हो। देखिए, आप डेमोक्रेसी में वोट देते हैं। वोट आपका क्या है? वोट आपका कंसेंट है। क्या आप वोट देकर रिवर्स कर सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले? नहीं कर सकते। तो आपका वो जो कंसेंट आपने पॉलिटिकल लीडर को दिया है, और ये याद रखिए कि एक आदमी और एक मर्द और एक औरत जब एक बेड में होते हैं तो ये उनका जाती पर्सनल मामला है, उससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो पूरी सोसाइटी को ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये जो वोट है ये आपका कंसेंट है, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। This is the dumbest analogy I've ever come across. In the end of the video, you'll be shocked at why he's giving these examples and what he'll defend in last. So stay focused with me guys, come on. Mufti claims that during elections, you cannot reverse your decision, which supposedly highlights a flaw in Western law. It's not a joke. In elections, you are free to vote for your favorite politician without any issues, especially in the West. America is a nation that can be defined in a single word. Mufti still believes that a woman might interrupt intercourse to assert dominance, but there are various reasons why both women and men may pause during sexual activity. If both parties are consenting and enjoying it, it's highly unlikely that either would change their mind and say, "Oh, I was enjoying it, but I've changed my mind, so please leave me alone." Have you ever reconsidered while watching porn and still enjoying it at the same time? जंग ना करे। और बाइडेन ने ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे आए कि बाइडेन को जंग करनी पड़ी। तो क्या आप उसको रिवर्स कर देंगे? नहीं कर सकेंगे। आप अपने कंसेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि लिबरल सोसाइटी में जो कंसेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सेबल हो, इरिवर्सिबल भी होता है। और जरूरी नहीं है कि फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, बल्कि पार्शियली या बिल्कुल भी इन्फॉर्म्ड ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो भाई कंसेंट का कोई एक मेयार तो तय होना चाहिए। कोई भी मेयार लिबरल सोसाइटी में तय नहीं है। Again, he's lying. But let's give him the mic, shall we? और एक अहम पॉइंट वो ये है कि एक मर्द या एक औरत अगर खुद ही अपना कंसेंट दे रहा है, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट का कंसेंट भी काफी है। एक मैं मिसाल देता हूं, ये केस है 1957 का, एक ब्रिटिश कोर्ट का। ये लीगल इंसाइक्लोपीडिया है, BMLR 5, उससे यह हवाला है। इन अ केस ऑफ नॉन कंसेंशुअल साइकाट्रिक ट्रीटमेंट where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. इसका मतलब ये हुआ कि एक केस हुआ था, उसमें ये था कि एक शख्स को साइकाट्रिक हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसका वो ट्रीटमेंट किया गया। वो शख्स जो है कोर्ट चला गया, तो लेकिन कोर्ट ने जो रूल किया वो ये किया कि आपके कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, जो कि डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है वो इस मैदान के जो माहिरीन हैं उनके तरीक़ेकार, उनके तय करदा जो उसूल ज़वाबित हैं, उनकी रोशनी में आपको ट्रीटमेंट दिया गया है। तो आपका कंसेंट हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस बंदे ने केस किया था वो केस हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि मगरिबी जो सोसाइटी है, जो लीगल फील्ड है, या जो सोशल मुआशरा है, जो सोशल जो मैदान है, हर जगह कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को भी कंसेंट माना जाता है। कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट माना जाता है, यानी अगर कोई आदमी खुद कंसेंट ना भी दे, लेकिन एक्सपर्ट की तरफ से कंसेंट और रजामंदी है तो इसको माना जाएगा। He manipulated a medical case to align with his agenda. According to the Bolam case, McNair J noted that expert witnesses had confirmed that much medical opinion was opposed to the use of relaxant drugs and that manual restraints should sometimes increase the risk of fracture. He also noted that it was common practice for doctors not to warn patients of the risk of the treatment when it is small, unless they are asked. Based on this evidence,
McNerney held that the doctor in the Bonham case had not been negligent. He reasoned that the doctor had acted in a way that was consistent with the views of a responsible body of medical opinion. McNerney's statement has also been criticized by some individuals. And now, it's 21st century. According to NHS.UK, which is a comprehensive public health service under government administration, says, and I quote, "Person must be given all of the information about what the treatment involves, including the benefits and risks, whether there are reasonable alternative treatments, and what will happen if treatment does not go ahead. Capacity. The person must be capable of giving consent, which means they understand the information given to them and can use it to make an informed decision." So, as you can see, this is the Wild West. No human rights at all. And yet these Western people criticize Islam and Islamic laws. I mean, they are so hypocritical. You know, let's see what he'll bring next. And honestly speaking, I am bored with his juvenile arguments. But let's hear him out. कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट माना जाता है, यानी अगर कोई आदमी खुद कंसेंट ना भी दे लेकिन एक्सपर्ट की तरफ से कंसेंट और रजामंदी है तो इसको माना जाएगा। No. अब आ जाते हैं एक और पॉइंट के लिए। कंसेंट के लिए दो रिक्वायरमेंट और है मगरिबी मुआशरे में, एक है कैपेसिटी और एक है कॉम्पिटेंस। No. Alright guys, that's enough of examples. It's easy to refute and all you need is a bit of research, but we'll focus on the main points. तो ये जो कंसेंट है ये इतना ज्यादा वेग है कि उसकी कोई नजीर नहीं है जो हम लिबरल सोसाइटी से लेते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अब जो इस पूरी मैंने कंसेंट के ऊपर गुफ्तगू की है उसका रिजल्ट क्या है? सबसे पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि ओवरऑल कंसेंट के लिए लिबरल मुआशरों में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। Nope, you have to fully inform the subject and I have explained it in detail. दूसरी बात यह है कि कंसेंट हमेशा रिवर्सेबल नहीं होता, उसका रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है। No. और तीसरी बात यह है कि अगर माहिरीन का फैसला हो जाए तो भी कंसेंट काफी है। He concluded that if the experts consent to something, then the consent of the subject is neither required nor accepted. Based on the Bonham test, a 1957 case that was not even about the consent at all. Mufti Saab, I believed you were the finest in the Iman Union after Amir Haq when it came to defending Islam. But it turns out you are the Almando Calvo for Islam actually. अब मैं आता हूं आपको जंग के ऊपर लेकर आता हूं। मान लीजिए एक जंग हुई मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान और उसमें गैर मुस्लिम खवातीन मसलन कैदी बनाकर लाई गई, उनको बांध दिया और कॉन्क्यूबाइन बना लिया गया। उनको अभी ये पता नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होगा। सवाल ये कि क्या उनका पता होना कंसेंट के लिए जरूरी है? नहीं जरूरी है। लिबरल सोसाइटी से मैंने मिसाल दे दी है। Mufti Saab is still relying on the Bonham case. I'm not offended by Mufti as much as by these Muslims, especially the women who are praising Mufti Saab. Such a moment of shame. मान लीजिए उनको बता दिया गया कि तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम्हारा जो आका है वो तुम्हारे साथ कंज्यूमेशन करेगा। क्या वो इस कंसेंट को रिवर्स कर सकती हैं? अगर वो उस वक्त कह दें कि हाँ ठीक है, लेकिन आगे चलकर वो कहें कि नहीं हम तैयार नहीं है, हमें इसको रिवर्स करना है, नहीं कर सकती। उसकी वजह है कि कंसेंट का रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है। मैंने लिबरल मुआशरे से इसकी मिसाल दी है। Again, he is wrong. I have showed you that the consent is reversible at any time, any moment. क्या वो इस कंसेंट को रिवर्स कर सकती हैं? अगर वो उस वक्त कह दें कि हाँ ठीक है, लेकिन आगे चलकर वो कहें कि नहीं हम तैयार नहीं है, हमें इसको रिवर्स करना है, नहीं कर सकती। उसकी वजह है कि कंसेंट का रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है। मैंने लिबरल मुआशरे से इसकी मिसाल दी है। And what if she says no in the first place? Will you consider her consent? That's a $1 million question, Mufti Saab. In his perspective, she has given consent in the first place, and now she can't reverse it. Alright, fair enough. But what if she says no? I would like to marry a peasant Christian or a Jewish man. Again, I repeat, will you consider her consent? Let's say some Hindus and Muslims engage in a fight, and the Hindus win, and they take Muslim women as captives, and the Hindu man says, well, the concept of consent in the Muslim world is shaky, so yeah, if she said yes, then she can't reverse it. The question here is, what if the Muslim woman says no in the first place? That's basically the consent. At least respect the basic consent instead of jumping to the concept of reversible consent. मुआशरे से इसकी मिसाल दी है। इसी तरीके से एक औरत ये कह सकती है कि भाई मैंने तो जंग की रजामंदी नहीं दी थी,
लेकिन उसके लीडरों ने तो दी थी, उसके शौहर ने दी थी, उसका शौहर बतौर सोल्जर उस जंग में शरीक था। तो माहिरीन का जो फैसला है वो भी कंसेंट माना जाता है। यही वजह है कि अगर किसी मुल्क के लीडर ने जंग का फैसला किया तो उस लीडर के साथ जो अवाम है शामिल, जो औरतें शामिल हैं, उनको बांदी बनाया जाए। Again, the same bullshit. He has nothing, literally nothing to respond to. उसकी मिसाल देता हूं। जब जंग कादसिया हुई यानी पर्शियन एम्पायर को खत्म किया गया, तो उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम था यजजर्द। उसकी 3 शहजादियां, उनको बांदी बनाया गया और उसके बाद उनको आजाद कर दिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ने हजरत अली से पूछा कि भाई इनका क्या करना है, ये तो शाही खानदान की है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ने कहा भाई मैं तो आजाद करता हूं अपना हिस्सा। हजरत अली ने आजाद किया, हजरत उमर ने आजाद किया, बकिया सब लोगों ने आजाद किया। तो उन यजजर की उन 3 बांदियों में से एक बांदी की शादी हजरत हुसैन से हुई, एक लड़की की शादी, एक शहजादी की शादी हजरत अबू बकर के बेटे से हुई और एक शहजादी की शादी जो तीसरे नंबर की थी, उसकी शहजादी हजरत उमर के बेटे से हुई। तो बाकायदा शादियां हुई और उनकी रजामंदी से हुई। If I were to give you 2 choices, either become my wife or be a slave to serve me, which option would you choose if you had nothing else left? Both are same in Islam. तो ये दरअसल वो खवातीन के जो जंग में शामिल हैं उनको बांदिए बनाया जाएगा। अब अगर कोई ये कहे कि भाई उनका कंसेंट नहीं था, उनका कंसेंट मैटर इसलिए नहीं करता कि उनके मुल्क के माहिरीन का कंसेंट था कि चाहे हमारी औरतों को बांदी बना लिया जाए तब भी हम जंग करेंगे। कहानियां। अच्छा, अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं और वो ये है कि, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कुरान करीम में एक आयत है, सूरे नूर में आयत नंबर 33, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ईमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा। उर्दू तर्जुमा पढ़ देता हूं। और जो मुकातबत करना चाहे, मुकातबत किसको कहते हैं? मुकातबत कहते हैं बाइंग योर स्लेवरी, बाइंग योर फ्रीडम। कि आप अगर अपने आका को मसलन ये कहें भाई मैं तुमको 10,000 रुपए 1 लाख रुपए देता हूं और तुम मुझे आजाद कर दो, इसको कहा जाता है मुकातबत। ये एक तरह का मुआहिदा है। तो अल्लाह फरमाता है और जो मुकातबत करना चाहें तुम्हारे ममलूकों में से यानी तुम्हारे गुलामों में से, तो उनसे मुकातबत कर लिया करो। और अगर तुम समझो कि उनमें भलाई है और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। इस आयत के नाजिल होने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और इसी तरह दीगर बहुत से सहाबा की राय ये थी कि ये जो मुकातबत करना है ये वाजिब है। क्या मतलब? यानी एक गुलाम और बांदी अगर अपने आका से ये कहे कि मुझे तो मुकातबत करनी है, यानी मैं अपनी फ्रीडम को खरीदना चाहती हूँ, ये लो पैसे और मुझे करो आजाद, तो गुलाम के लिए, आका के लिए जरूरी है कि वो इसको कबूल करे, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब अगर उस बांदी के पास पैसे नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे? अल्लाह ताला ने खुद बता दिया आगे, वातूहुम मिम्मा लिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम। मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम पैसे दो, अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है, तुम माल के जरिए इसकी मदद करो। ज़कात के जो मसारिफ है उनमें से एक मसरफ इस तरह के गुलामों को आजाद कराना है। जरूरी है ये मुसलमानों के लिए कि उसकी मदद करें। He's talking about manumission or self-purchased freedom, which was even practiced in ancient Rome. I can give a long lecture about the rights of slaves in Rome or other societies. But again, the question is, did they abolish slavery? The answer is no. These Muslims argue that Islam abolished slavery slowly, but in reality that's not true. For over 1,000 years, Muslims were not able to abolish slavery until Western powers pressurized the Muslim world. In the early 20th century, the authorities in Muslim states gradually outlawed and suppressed slavery, largely due to pressure exerted by Western nations, such as Britain and France. Slavery in the Ottoman Empire was abolished in 1924, 1924, when the new Turkish constitution disbanded the imperial harem and made the last concubines and eunuchs free citizens of the newly proclaimed republic. Slavery in Iran was abolished in 1929. In the Persian Gulf, Saudi Arabia and Yemen abolished it in 1962, while Oman followed in 1970. Mauritania became the last state to abolish slavery. The nail in the coffin is that it wasn't abolished in all these years, and still, some Muslims say that they'll bring back slavery. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you 2 good options. You can say, oh, this one hadith destroyed sex slavery. You can say, oh, the ex-Muslim accepted Islam because he got the answer on slavery. You can stream for 6 hours to defend Islamic slavery, or why not just make it 100 hours stream? It won't change anything. You can't defend a murder and you can't defend slavery at any cost, no matter how much you treat slaves better. They are still slaves.
But it's okay. Just watch these streamers and increase your so-called demand. You just can't defend. If you are a radical porn addict Muslim, then of course you will have no issue with sex slavery. Most of them are just kids praising Taliban and badass attitude and Sigma status, etc. But that's a different topic, where we will expose these so-called giga chads and Sigma alpha kids. So kindly subscribe to my channel. मुस्नद अहमद में एक रिवायत है और ये उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिन्तुल हारिस हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनके निकाह का वाक़या है। कबीला हवाज़िन से आती हैं। जब हुनैन की जंग हुई और हवाज़िन के जो लोग हैं वो कैद होकर आए तो उनमें जुवैरिया बिन्तुल हारिस भी थी। ये भी बांदी बनकर आई और ये किसके हिस्से में गई? ये साबित इब्न कैस इब्न शम्मास एक सहाबी हैं, उनके हिस्से में आई। और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में हजरत आयशा ये फरमाती हैं, माफ कीजिएगा, हजरत जुवैरिया के बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो एक खूबसूरत खातून थी, वजीह खातून थी। उनको यानी वो ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया जाए, जिसके हिस्से में वो आए वो आसानी के साथ उनको छोड़ दे, ऐसा नहीं था। अब हजरत जुवैरिया ये फरमाती हैं कि मैं साबित इब्न कैस के हिस्से में आई, फकातबतुहु अला नफ्सी, मैंने साबित इब्न कैस को से मुकातबत कर लिया, मैंने कहा कि मैं पैसे दूंगी, मुझे आजाद करो। साबित इब्न कैस इसको मुस्तरद नहीं कर सके, क्योंकि कुरान का हुक्म है फकातिबुहुम, मुस्तरद नहीं कर सके। उसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जुवैरिया के, या रसूलुल्लाह मैंने मुकातबत कर ली है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की और ये ऑप्शन भी रखा कि अगर तुम इससे बेहतर ऑप्शन चाहो मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा और तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो निकाह कर सकती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मर्जी के साथ निकाह किया। Wow, that's great. The Prophet Muhammad said, I will pay off your contract of manumission and marry you. She said, I accept. Wow, that's great. What an amazing personality. I have just one thing to say. Please Muslims, just replace the characters. Let's say that I am in the place of the Prophet Muhammad and Javeria is a Muslim woman who is being enslaved. And I say to her, I will pay off your contract of manumission and I as an atheist will marry you. So you will be saved from such an insult. And she says, I accept it, oh my atheist love. Wow, I mean, isn't this amazing? That's just great. A Muslim woman will marry an atheist to be saved from such a dishonorable act. This is an amazing love story, isn't it? And please don't be offended by this. It was just an example. If someone says murder is right, all you need to do is to tell them that what if someone murders their loved one or them? Will they say it's right? अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है, मान लीजिए एक मैं सिनेरियो बताता हूँ, एक लड़की, एक औरत मुसलमानों के पास बांदी बनकर आई, उसके सामने ये ऑप्शन है कि चाहे तो वो मुकातबा बन जाए, यानी वो अपनी आजादी को खरीद ले और आजाद हो जाए। पैसे उसके पास नहीं है, मुस्लिम सोसाइटी उसकी मदद करेगी। लेकिन अगर वो ये कहती है कि नहीं भाई मुझे मुकातब नहीं बनना है, या पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, व्हाटएवर, मैं बांदी ही रहना चाहती हूं, तो उसने कंसेंट दिया है बांदी बनने का। और उस कंसेंट के बाद फिर वो अपने आका के साथ, अपने मौला के साथ, अपने मास्टर के साथ, जिसको मास्टर कहना गलत है लेकिन लफ्ज चूंकि वो इस्तेमाल है, वो उसके साथ इस तरीके से जिंदगी गुजार सकती है कि जिसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो उसकी एक्चुअल वाइफ है, लेकिन उसका दर्जा वाइफ से कुछ कम होगा। एग्जैक्ट वाइफ नहीं होगा लेकिन वाइफ से कम होगा, लेकिन उसको मिस्ट्रेस नहीं कहा जाएगा, उसको साइड चिक नहीं कहा जाएगा, उसको ग्रुपी नहीं कहा जाएगा, उसको रखेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि मुआशरे में उसका मकाम है, माशरे में उसका मर्तबा है। Of course, she has a status. She's a daughter of Hawa, but she's a sex slave now. Adam and Hawa must be proud of their sons enslaving their sisters. And he'll also be so proud of Mufti Wajidi, Sam Stallone, Amir Haq, Sister Irina, Dao Boys, and Kessel Raja for defending such an abuse against their own sisters. Keep in mind, it's the Muslims who say we all are sons and daughters of Adam and Hawa. So yeah, keep defending slavery. The daughters of Adam Hawa being sold in the markets. Shame on ABUZAR Responds and all these Muslims, especially women, who congratulated Mufti Wajidi just because he is trying to destroy atheists. And now, don't visit these defenders. Believe me, they can make a 1 million hours video and still they can't defend sex slavery.
Accept this as a fact. तो वो जब कोई भी बांदी कंज्यूमेशन करती है अपने मौला और अपने आका के साथ, तो दरअसल वो मुकातब होने के स्टेटस को खत्म करके ये कंसेंट देती है कि नहीं जी मैं अपने आका के साथ रहूंगी, तो कंसेंट तो है मौजूद। तो वो कंसेंट जो मगरिब का मयार है, जो लिबरल सोसाइटी का मयार है, उसकी तो कोई हैसियत है ही नहीं। वो तो इतना शेकी है कि आप उसको कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। Yeah, the Western concept of consent has no value. Wow, that's amazing. The West, you know, the West. I mean, it's so shaky. And I ask myself sometimes that why Pakistan is in crisis. I mean, just take a look at the youth. The youth of Pakistan has exposed the Western shaky laws. So thank you, lads and ladies, for watching this response and having the patience to watch it to the end. I appreciate those Muslim brothers and sisters who had the patience to watch this video. I really do. Thank you. Wassalam.